तो ह्यूस्टन में लगातार ट्रॉपिकल स्टॉर्म मार्को और लॉरा का खतरा लगातार बना हुआ है। ऑफिशियल्स अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं। वहीं ह्यूस्टोनियंस का मार्को और लॉरा पर क्या कुछ कहना है, ये भी देखिए। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म ह्यूस्टन को हिट करेगा, जिसके बाद से ह्यूस्टोनियन ग्रोसरी और नेसेसरी आइटम को लेकर काफ़ी कंसर्न नजर आते हैं। We are preparing for the storm. ट्रॉपिकल स्टॉर्म मार्को के लुजियाना स्विंग होने के बाद अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म लॉरा ह्यूस्टन को मिड ऑफ द वीक हिट करेगा, जिसके बाद से ह्यूस्टन के बड़े ग्रोसरी स्टोर्स पर ह्यूस्टोनियन ग्रोसरी एंड नेसेसरी आइटम्स बाय करते नजर आए। कुछ स्टोर्स पर वाटर की शॉर्टेज नजर आई क्योंकि पब्लिक की सबसे ज्यादा डिमांड वाटर की है। पानी एक्चुअली ये होता है, मैं हमेशा लास्ट हार्वी में भी मेरे पास एक बड़ा कूलर था जिसमें मैंने दूध स्टॉक किया हुआ था जो नेबर्स के लिए। मेरे पास पानी का तो फिल्टर है, मैं वो यूज़ करता हूँ, मगर किसी को ज़रूरत पड़ गई आसपास में भाई बहन। Bought a lot of water and a little bit of canned food just in case. Water and egg, milk, pasta. Well, I bought a lot of stuff that requires just batteries, so if I lose power, I bought some candle holders, but they're enclosed so I don't catch fire in the house. लोगों का कहना है कि ग्रोसरी एंड नेसेसरी आइटम की स्टोरेज के साथ साथ हर तरह की सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये स्टॉर्म वर्स भी हो सकता है। Be ready. It's gonna be worse, and it's better to do it now than later saying sorry. It's better to be at home safe, everyone. Pay attention to the news and just be ready. Just get anything that the wind might pick up out of your yard. You should get ready before it comes. You don't want to get wet and don't want it to flood when you go past when it's the hurricane time. आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन।